this climate of hate, what has it done to our society? I've been in about 2017 when the lynching started. I was deeply dismayed by what I saw was this culture of silence. And Martin Luther King, I think, somewhere said that in the end we won't remember the words of our enemies, we'll remember the silences of our friends. And it was important to try to break the silences. And so I spontaneously said, I want to begin a journey and learning from Gandhiji that if you want to fight hate, if you fight hate with hate, your hate and my hate, and hate is only going to deepen. The only way to fight hate is to have a different kind of discourse, to not go in with hate. And therefore we called it Karwane Mohabbat, a caravan of love. And we resolved that we would go to the homes, as I did just yesterday. It must be the 100th journey that I've made in these last years, because lynching just continues. And each one of them you come back with a huge heaviness of heart. The kind of, what happens in a lynching. And please understand, lynching is different from communal violence. Lynching is violence as performance, as theatre. It is violence that is done in order to convey a set of messages. So, lynching, actually, the word started, the word where we know the whole story of lynching is in Jim Crow's America. In what used to happen, they would almost invariably, it was always black men, almost always charged with a kind of love jihad kind of charge. This idea of the vulnerable category of person is a sexual predator, is again something that has recurred and recurred. So it would be charges of that kind. And what would happen is that people would gather in thousands, families, like a picnic. Children would be brought, and they would watch as this man is stripped down, his fingers are cut off, his genitals are cut off, he's tortured and then finally hung from a tree. One of the historians of America say that every lynching was like 1,000 lynchings that reverberated across the land, the rivers, the forest, the desert, and settled as fear in the heart of every African American. The total number of lynchings over 60 years is not more than about 4,000. हमारे एक Sikh riot में या गुजरात के दंगों में, if you get the real figures, one riot would. In India, we are trying to keep a tracker. We're building this tracker. It may be a few hundred instances. Now you might say, what's the big deal? You have to understand what lynching does. So the performance as hate, violence as a performance. We've replaced the physical gathering of people with the video camera. In almost every lynching, people themselves film the lynching, and they film how the man, he's begging for his life, he's screaming. I've just, in fact, while coming here, I was again looking at the videos of Aligarh where I was yesterday. It's just it's unbearable on the soul that this is what we're doing. So you have these young men who gather and वो पीट के और वो चिल्ला रहा है, begging, etc.
as it happens, this was it's I find somewhat dangerous to say they were innocent, meaning that if मान लीजिए कि उन्होंने गाय काटी भी थी, just for the sake of the argument, there's a law, let the police arrest them and take legal action. It does not justify ordinary people gathering and doing this. मतलब पुलिस के नज़र में, पुलिस को देखते हुए, पुलिस के संरक्षण में. But here, as it happened, the interesting thing is that we talk about all of this, but our beef exports have actually grown hugely in the last 10 years. And these are owned by, often by Jains and and so these 4 men belong to the Qureshi community, and they are not allowed to slaughter any longer. But what they can do is that they go to this factory which has permission to slaughter buffaloes, and then they buy the meat, and then they buy it, transport it, and sell it in the retail shops. It's a livelihood. और बहुत ज़्यादा भी नहीं कमाते हैं. वो बता रहे थे कि 230 रुपये में खरीदते हैं, 260 रुपये में बेचते हैं. So it's a humble livelihood that they are doing, but it's the only work they know in this community. Hasn't done any other work. उसको लेके उन्हें पूरे कागज़ दिखाए कि this is legal. डॉक्टर का सर्टिफिकेट होता है कि this is buffalo meat, this is legally procured, etc., etc. But they beat them so badly, and the police came and did not protect them, and that is why this went on. और फिर इन वीडियोज़ में एक चीज़ भी होता है कि मैंने बहुत सारे लिंचिंग्स के वीडियोज़ देखे हैं कि खून जब बहुत बह जाता है, one of the last things that you do is ask for water. बहुत प्यास लगने लगती है, and they're great, the power that they have कि हमने पानी तक नहीं दिया, and that man becomes unconscious. Now this is cruelty, mass cruelty done over and over again. So every lynching is like in India is like 10,000 lynchings that reverberate across the land and the rivers. Let me give you an example. एक लड़का था जुनैद, who he was returning after buying things for Eid for his family, and he was lynched to death. उस incident के बाद I have young Muslim friends who repeatedly tell me कि बहुत डर लगता है when we travel on a train now, and your mother tells you कि हम फ़ोन करें तो अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना, किसी से बातचीत नहीं करना, पॉलिटिकल डिस्कशन हो तो बिल्कुल ही नहीं करना, खाना नहीं शेयर करना, etc., etc. Whereas the train was a place where we all, it's sort of where we all met together and made friendship. This hate is lynching actually has created this climate of hate. So every lynching becomes 10,000 lynchings that spread across the land and the rivers, etc., and settles as fear in the heart of every Muslim, and hate in the heart of at least growing numbers of Hindus. And that is the purpose of lynching. हमने तय किया कि हम लोग हर घर पे जाएंगे जहाँ पे ये लिंचिंग्स हुए हैं. कहाँ से सीखा पहले? Think of Gandhiji's last month. What happens? People were slaughtering each other, and what was his instinct? He said, वहाँ जाएं, उनका दुख बांटें, और नाखोली गए, फिर बिहार गए, फिर कलकत्ता. जब यहाँ पे भी was celebrating our independence, he was in Calcutta trying to ask people to fight the hate. तो हमने कहा कि हम उससे कुछ सीखते हुए we'll go to the home of every family who has lost a loved one to lynching,
और हम उनसे 4 चीज़ें कहेंगे। पहले कि यू आर नॉट अलोन, हम आपके दर्द में शामिल हैं, साथ में आंसू बहाते हैं, साथ में that sense of isolation incidentally among people who've been lynched is much higher than in a communal riot. Communal riot में at least there's a community of victims. यहाँ बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और बहुत डर का माहौल है, आपके अपने कम्युनिटी के लोग भी सामने आने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उस वक्त में ये कहना कि आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वी सीक फॉरगिवनेस फॉर व्हाट वी बिकम, हम शर्मिंदा हैं। तीसरा कि हम वादा करते हैं कि कुछ भी हो, as you pick up the broken pieces of your life, as you fight for justice, we will be there for you, with you. And last, we will tell your story. हम आप एक कहानी को बताएंगे, because one of the first things you want when you have suffered this is you want at least के acknowledgement कि मेरे साथ हुआ। और हम लोग एक जर्नी में we set off. We started in Assam, और हम सोचे कि we'll go across the country जहाँ lynchings हुए, और finally we ended up on 2nd October in Porbandar. But वो एक जर्नी अब चलता जा रहा है, चलता गया है, क्योंकि ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता। फैमिलीज़ हमसे कहते हैं कि जैसे काश बस गोली मार देते, काश बस छुरा मार देते, इतना टॉर्चर करके क्यों मारा? Why did they gouge out his eyes? Why did they smash his genitals? मतलब इतनी नफ़रत कहाँ से आ रही है और क्यों? ये सवाल वो पूछते हैं। मैं बार बार पूछता हूँ, किसी ने बचाया होगा? किसी ने? और almost in every case nobody intervened. और लोग जब इकट्ठा होते हैं, आप बच्चों को भी देखते हैं, आप ये भी देखते हैं। हापुर यहाँ पे एक लिंचिंग हुई थी। there was a middle aged 45-year-old man, वो बहुत गरीब थे, और he used to buy baby goats और उनको फिर वो मोटा करते थे और फिर बेचते थे और थोड़ा कमा लेते थे। किसी ने अचानक ये मंदिर के उसमें से घंटी से करके बोला कि he has killed a cow, और लोग इकट्ठा हुए और उसमें they lynched him to death. His family said कि एक जगह नहीं था जहाँ पे people had brought जैसे कुछ भी घर से, स्क्रू ड्राइवर, पेन, कुछ भी, where they, and there were children also among it. ये जो नफ़रत जो हम फैला रहे हैं, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। What is it doing to us? एक इंसिडेंट हुआ था, राजसमंद एक जगह है उदयपुर के पास। It was the 25th anniversary this time of the Babri Masjid demolition. This young man said कि मुझे I have to performatively kill a Muslim in revenge, anyone. फिर वो अपना पूरा प्लान बनाते हैं कि वहाँ पे बंगाली मुस्लिम लेबरर्स कंस्ट्रक्शन के लिए हर साल जाते हैं, तो आप किसी को कंस्ट्रक्शन के लिए बुला लें तो you'll get your victim. Then somebody had to record it. So he got his 14-year-old nephew to become his ally, to record him when he did this. And it's terrifying because I've seen that video. हम लोग 2 या 3 दिन बाद गए, तो सुबह वो फ़ोन करते हैं कि एक थोड़ा सा आइसोलेटेड जगह में हमारा प्लॉट है, हम मकान बनाना चाहते हैं। वो आए, विदिन 15 seconds of him reaching there, he started bludgeoning him to death. His last words were, बाबू मैंने किया क्या? And then he becomes unconscious. And then he puts petrol on him and then he sets him on fire. But the most terrifying thing is ये बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है
और उनका हाथ इतना स्टेडी है जैसे कोई ट्राइपॉड में कर रहा हो। तो आप ये सब अपने सामने देख रहे हैं। मैं एक महीने बाद एक वहाँ वापस गए हम लोग, और वहाँ के हिंदू समाज में मीटिंग बुलाई, और मैंने कहा कि ये हुआ है आपके इसमें, आपको हमदर्दी उस निर्दोष आदमी से नहीं है जिसके साथ ये हुआ, वो बच्चा तो आप ही का था ना। Is this how you want your children to grow up? Is this what we are doing to our children? कि he can see some innocent man being bludgeoned to death, set on fire, and हाथ कांपता भी नहीं है उसका। What are we doing to ourselves? ये सवाल है ना, ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। और वक्त नहीं है तो मैं और उदाहरण नहीं दूंगा, और आई कैन गो ऑन टिल नाइट एंड टुमारो मॉर्निंग टेलिंग यू अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, बट आई रोट रिसेंटली अबाउट, मैंने कहा कि जहाँ वे प्रेयर हैज़ बिकम अ क्राइम। बहुत अजीब बात यह है कि कोई नमाज पढ़ रहा है, एक महिला अस्पताल में, उनका लव्ड वन वाज very sick, so she sits outside and performs a namaz. They gather and they ring and they say, case after case like this, they are charging them with creating hatred against other communities by simply praying. हम लोग, बाकी लोग तो प्रे भी करते हैं ना वहाँ अस्पताल में, हर धर्म के लोग, वो उसकी इजाज़त है। इन दी इंडिया आई रिमेंबर्ड, कोई आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बहुत क्राउडेड भी है, तो कोई सी बुज़ुर्ग मुस्लिम आदमी नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, सब लोग बहुत रिस्पेक्ट के साथ जगह बनाते हैं, वो अपना नमाज़ पढ़ते हैं, सब लोग मतलब खामोश रहते हैं। अब नाउ यू हैव के उसको मतलब टीज़ कर रहे हैं लोग, चढ़ा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं जब वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। नफ़रत जो राइट्स में मैंने बहुत देखे हैं, हैंडल किए हैं। राइट्स के लिए पहली चीज़ है क्रिएशन ऑफ हेट्रेड, मैन्युफैक्चर ऑफ हेट्रेड। ऑर्डिनरीली लोगों के बीच में नफ़रत नहीं है, आपको क्रिएट करना पड़ता है और कहानी के साथ। लेकिन लिंचिंग में कुछ नया हुआ है, वो है कि, और जो आज हमारी जो फ़ोन्स के माध्यम से हम लोगों का डेली डोज, मतलब आप नफ़रत का जो लाइक अ फिक्स, हम अपना फ़ोन खोलते हैं, सुबह अपना फिक्स मिल जाता है, दिन में 3-4 बार हम देख लेते हैं, नया फिक्स मिलता है। नफ़रत हमारे रगों में भरता जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में?